We're just awaiting the all are requested to be in your seat, please.
ईस्ट पूर्व देशांतर या लॉन्जिट्यूड के बीच उतरकर आज भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस अक्षांश और देशांतर पर उतरने के लिए लगभग 84 मिनट पहले ही पूर्व निर्धारित निर्देशांकों 70.89992 साउथ अक्षांश और 22.7811 पूर्वांतर देशांतर को लैंडर के कंप्यूटर को भेज दिया गया है। किन्हीं तकनीकी कारणों के चलते अगर ये संभव न हो सका तो इसरो ने इसके लिए दूसरा विकल्प भी तैयार रखा है, जो ALS-0, ALS-1 जो 67.74915 साउथ अक्षांश और 18.46947 वेस्ट देशांतर लॉन्जिट्यूड का चयन कर लिया गया है। आज के दिन तक पहुंचने से पहले चंद्रयान 2 की 48 दिनों की ये लंबी सुनियोजित यात्रा चुनौतियों, कल्पनाओं और यथार्थ की गणनाओं से भरी हुई थी और आज ये यात्रा आज अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंची है। इस संपूर्ण यात्रा का वृत्तांत अगर सार संक्षेप में कहें तो केवल इतना कि एक तरफ चुनौतियों की कमी नहीं थी तो दूसरी तरफ चंद्रयान 2 के सृजनकर्ताओं के आत्मविश्वास और तकनीकी नेतृत्व में भी कभी कोई कमी नहीं आई। तभी आज भारतीय वैज्ञानिकों और उनका ये अभियान हर कसौटियों पर खरा उतरा है। तभी ये अभियान तकनीकी और एक लंबे इंतज़ार के बाद आज वो घड़ी आ ही गई जब हम अपने इस अभियान को पूरा करने के साथ ही एक ऐसा इतिहास रचने जा रहे हैं जो आने वाले दिनों में एक मील का पत्थर साबित होगा। किसी भी अंतरिक्ष विज्ञान समृद्ध राष्ट्र के लिए वो दिन बहुत मायने रखता है जब वो शेष विश्व की तकनीकी और विज्ञान के उन्नत राह पर कदम से कदम मिलाकर चलने को तत्पर हो और तैयार हो। गर्व और उत्साह, आत्मविश्वास और प्रगति पथ पर अग्रसर होने की चाह जैसी भावनाओं का मिला जुला प्रवाह आज चंद्रयान 2 के साथ हर भारतीय के दिल में जागृत है। इस समय आप मिशन कॉम्प्लेक्स के अंदर का ये विहंगम दृश्य देख रहे हैं। बड़ी बेसब्री से हर भारतीय वैज्ञानिक आंकड़ों पर गहन नज़र बनाए हुए है। हर आंकड़े अपने आप में एक पूरी कहानी बयान करते हैं। The countdown is at -22 minutes, 2 seconds to go. After 22 minutes, you will be witnessing the power descent of the Vikram lander module. As I just mentioned, the Vikram lander module is presently orbiting in an orbit of 30 kilometers perihelion, which is the lowest altitude from the surface of the moon, and the apollune, which is the highest point of the orbit from the surface of moon, is around 100 kilometers. And once the descent operation starts, we expect to take roughly around 15 minutes. And some of the important events during the descent phase
which we'll be covering in the subsequent point as we go closer to this particular activity. But before we do that, just to get a update on the orbiter module, which has been orbiting in an orbit of around 100 kilometers. As you are all aware, the total mass of orbiter module is 2,369 kilograms. At launch, we had the composite module of orbiter and the Vikram lander, which was 3,850. So the orbital module, now that it has got separated from the Vikram lander, has a mass of almost 2,370 kilograms. And out of this total mass, the orbiter, the fuel the orbiter carried was almost 1,683 kilograms. So eventually, if you look at the capability of the orbiter, almost 70% of its mass is the fuel. And the primary reason for requirement of such a large quantity of fuel is basically to raise the orbit from the Earth to the moon and then lower it down very close to the moon. As I already mentioned, when the spacecraft was injected in an orbit of around 39,000 kilometers around the Earth, eventually the orbit using the propulsion system of the orbiter was raised to 400,000 plus kilometers to get captured in the sphere of influence of the moon. So the orbiter model has a single engine which has performed nearly 10 orbital raising and lowering maneuvers, and in the process, if you look at it, is almost operated for nearly 10,000 plus seconds, which is quite a substantial time as far as the number of times and the duration for which the thruster was fired. So orbiter, in addition to all the technological elements and the challenges, has 8 scientific payloads on board, and which are primarily meant for several scientific purposes, namely carrying out the 3-dimensional mapping of the lunar surface, chemical composition, high resolution imaging of the landing site, mapping lunar craters in the polar regions, in addition to study of lunar exosphere. So life of the orbiter right now is around 1 year in orbit, as it will be orbiting around 100 kilometers from the surface of the moon, and has, as I mentioned, several scientific measurements. So the countdown is now minus 19 minutes. So on your screen you can see a plot of the time when the Vikram is going to descend from an altitude of almost 30 kilometers. It's going to cover nearly 600 plus kilometers at touchdown, and we are very close to that particular event to happen. As I mentioned, during the powered descent time, it will be several phases over which the orbiter will be brought down to the lunar surface. It's not a single event where we just reduce the velocity and go to a lower altitude. It will be going through several phases of orbital altitude reduction and the velocity reduction, which we will explain as we come closer to this flight event. जी हाँ, इस समय हम लगभग 18 मिनट की दूरी पर जब विक्रम जो है वो उसका डिसेंड या उसका अवतरण शुरू होगा, अन्वेषण की तरफ बढ़ते हुए भारतीय कदम जो हैं उसी की दिशा में चंद्रयान 2 एक और कड़ी है। चंद्रमा हमें पृथ्वी के क्रमिक विकास और सौर मंडल के पर्यावरण की अविश्वसनीय जानकारियां दे सकता है। वैसे तो कुछ परिपक्व मॉडल मौजूद हैं, लेकिन चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। चंद्रमा की सतह को व्यापक बनाकर इसकी संरचना में बदलाव का अध्ययन करने में मदद मिलेगी। चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास के बारे में भी कई महत्वपूर्ण सूचनाएं जुटाई जा सकेंगी। वहां पानी होने के सबूत तो चंद्रयान 1 ने खोज ही लिए थे, और यह पता लगाया जा सकेगा कि चांद की सतह और उपसतह के कितने भाग में पानी है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव विशेष रूप से दिलचस्प है, क्योंकि इसकी सतह का बड़ा हिस्सा उत्तरी ध्रुव की तुलना में अधिक छाया में रहता है। इसके चारों ओर स्थायी रूप से छाया में रहने वाले इन क्षेत्रों में पानी होने की संभावना अधिक होगी। चांद के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र ठंडे क्रेटर्स जो गड्ढे हैं, वहाँ पे प्रारंभिक सौर प्रणाली के लुप्त जीवाश्म रिकॉर्ड मौजूद हो सकते हैं। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं डॉक्टर BN सुरेश को, डॉक्टर TK एलेक्स, ये 2 महान वैज्ञानिक जो हैं भारत के एक तरह से स्तंभ कहे जा सकते हैं, जिन्होंने रॉकेट में और उपग्रहों में विशेष भूमिका निभाई है। आप अंदर का दृश्य देख पा रहे हैं। इसी तरह से अगर हम आगे बात करें तो इस तरह के कई अंतरिक्ष अभियान भारत भेज चुका है। एस्ट्रोसैट था,
मंगल कक्षत्र मिशन था, चंद्रयान 1 था, और इसी तरह के अभियान आने वाले वर्षों में और भी हैं जहां पे इस तरह के अभियान आप देख पाएंगे। चंद्रयान मुख्य रूप से 3 मॉड्यूल से मिलकर बना हुआ है। ऑर्बिटर जो चंद्रमा की सतह का निरीक्षण करेगा और पृथ्वी तथा चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम के बीच संकेत रिले करेगा। विक्रम लैंडर विक्रम को चंद्रमा की सतह पर भारत की पहली सफल लैंडिंग के लिए अभिकल्पित किया गया है। प्रज्ञान रोवर ये 6 पहियों वाला वाहन है। इसका नाम प्रज्ञान, जो संस्कृत के ज्ञान शब्द से लिया गया है। ये पहला अंतरिक्ष मिशन है जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र पर सफलतापूर्वक लैंडिंग का संचालन करेगा। पहला भारतीय अभियान है जो स्वदेशी तकनीक से चंद्रमा की सतह पर उतारा जाएगा। पहला भारतीय अभियान है जो देश में विकसित प्रौद्योगिकी के साथ चांद की सतह के बारे में जानकारियां जुटाएगा। और मेरे ख्याल से अगर ये आज सब कुछ सही होता है तो चंद्रमा की सतह पर रॉकेट उतारने वाला चौथा देश बन जाएगा। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो चुका है और कुछ ही क्षणों में वो हमारे इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आ सकेंगे। हमारे उनके स्वागत के लिए हमारे इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक और विभिन्न केंद्रों के निदेशक उनका स्वागत करते हुए जैसा कि आप इसको स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के शिवन ने। डॉक्टर कुन्नी कृष्णन जी जो यूआरएससी के डायरेक्टर हैं और डॉक्टर वी श्रीनिवासन जी जो इस ट्रैक के निदेशक हैं, वो इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए, बहुत महत्वपूर्ण होता है वो देश, वो क्षण जहाँ पे उसके रहनुमा उसके साथ खड़े होते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण घड़ी है जब हमारे माननीय प्रधान जी हमारे साथ हैं। So we just witnessing the arrival of Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who has just arrived here at the Mission Operation Complex at ISRO's Tracking and Telemetry Command Network in Bangalore. He will be amongst us to witness today's important historic event when Vikram lander will be on the surface of the moon. So on your screen, Dr. K. Shivan, Chairman ISRO, Indian Space Research Organization, giving him a brief outline of the mission where the Vikram lander and the rover Pragyan is being explained to him. Confirm the parameters are accepted. Honorable Prime Minister of India. We'll be moving to the dignitaries gallery. प्रधानमंत्री जी का उत्साह देखने लायक, हर छोटी छोटी चीज का बड़ी बारीकी से निरीक्षण करते हुए, चहलकदमी करते हुए धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचते हुए। भारतीय वैज्ञानिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए आज हमारे बीच एक बार फिर से मुझे याद आता है जब मार्स ऑर्बिटर मिशन के लिए इसी तरह हमारे बीच आए थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री, और ये दोबारा एक बार फिर से सभी से परिचय लेते हुए डॉक्टर के राधाकृष्णन, इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी, उनके पीछे थे प्रोफेसर के विजय राघवन जी जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और इस तरीके से फिर से एक बार उन्होंने डॉक्टर सुरेश जी के सामने उनसे हाथ मिलाया, डॉक्टर टी के एलेक्स जी, डॉक्टर PS गोयल जी, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी अपना स्थान ग्रहण करते हुए। So the countdown is at minus 12 minutes. So within the next 12 minutes you will have the command that will be issued for starting the descent phase of Vikram lander. So Honorable Prime Minister of India is seated in the dignitaries gallery along with some of the other senior officials of ISRO as well who are here. And in the dignitaries gallery we also have some of the other prominent and very important dignitaries who will be witnessing the launch. As you would have seen during the coverage, we have a lot of students who have been invited here to witness the launch. This basically the students who are here have been selected based on the online space quiz competition that was conducted for the students who are in the range of class 8 to 10 across all the states in India.
and historic lunar landing event along with only 84 plus school students who are here in the mission operations complex. जी हाँ, आपको याद दिलाता चलूं कि चंद्रमा के लिए भारत का प्रथम मिशन चंद्रयान-1 श्रीहरिकोटा से 22 अक्टूबर 2008 को सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया था। अंतरिक्ष यान चंद्रमा की रासायनिक, खनिज विज्ञानी एवं प्रकाश भूविज्ञानी मानचित्रण हेतु चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा कर रहा था। अभियान के इस मुकाम पर उपयुक्त होगा अगर हम उन दिनों की भी याद कर लें जब इस उपग्रह को GSLV Mark 3 M1 द्वारा 22 जुलाई 2019 को 14:43 12 सेकंड पर 973.7 सेकंड पर अब यह लॉन्च व्हीकल LVM-3 M4 रॉकेट ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस के अंतर्गत है। इसका मतलब ऑन बोर्ड कंप्यूटर We are very close to the launch, and the day of launch wind biasing data is fed during the countdown to the onboard computers to enable most suitable steering of the launch vehicle through atmosphere. Up next on this mission. Number 465 request CGSS to confirm supply of Moon. This familiar object in the night sky has inspired the imagination of astronomers and ordinary people alike. From time immemorial, humans have marveled at the beauty of the moon, used it to count time and navigate the high sea. Has acquired added importance due to the belief that moon is the key to our understanding of the evolution of the solar system in general and Earth in particular. Besides, moon's precious resources and low gravity have further endeared it to humans. India's Chandrayaan program. The country has sent 2 robotic spacecraft to orbit the moon and to take a repeated look at its surface. Chandrayaan-1 demonstrated India's ability to reach the surface of the moon at a place and time of its choice. And with it, India became the 4th country to once conclusive discovery of water on the moon in 2009 was praised as a path-breaking discovery. The follow-on mission Chandrayaan-2 had an orbiter, a lander called Vikram and a rover named Pragyan. In the past 4 years, the orbiter has repeatedly observed the lunar surface and even today is working satisfactorily. Now, 3,900 kilograms Chandrayaan-3 spacecraft is being sent to the moon with the objective of making yet another focused attempt to slowly land on the lunar surface and to explore it with the help of a rover. Following the spacecraft launched by India's most capable rocket LVM-3, the Chandrayaan-3 lander carrying a rover within it will be carried into an orbit around the moon by the propulsion module. A little later, the lander will separate from that module and will attempt to make a soft landing in the south polar region of the moon. This region is of intense interest as it has many permanently shadowed craters which could contain water ice and precious minerals. Chandrayaan-3 lander has 4 scientific instruments or payloads, of which one studies as to how the surface of the moon allows heat to flow through it. The third one will study the plasma environment near the moon's surface. And the fourth instrument, the 2 instruments on the rover, help us study the composition of the moon's surface using X-rays and laser respectively. While the lander and rover will be in direct contact with
circling stars other than the sun. As Chandrayaan-3 undergoes important tests and gears up for launch, thousands of ISRO scientists, including those who will launch it, control it and receive the precious scientific information from it using giant dish antennas, are readying themselves for the challenging tasks ahead. In the past, their dedication and skill have enabled India to earn praise from across the world and made it proud. Let us